Dear students, today, as you know, there is the test series of class 9 for set A mathematics. So the video lecture of all the important questions as promised to you are there in front of you. I'll take some very important and questions, such questions where you may find it difficult. First, let me take question number 7. Now, what is given over here? It's written curved surface area of cylinder is to total surface area of cylinder is given as 1:2, and we need to find the ratio of the height is to radius. Now, this is simple in approach. You just take the formula for these two. Curved surface area of cylinder, as you know, the formula is 2 pi RH, and total surface area of cylinder, as you know, is 2 pi R into R plus H. So this is the basic relation between basic formula of curved surface area and total surface area. Now, if I take this as 1:2, that is 1/2, I can see that 2 pi and R get cancelled. Now, if I want to find a ratio of H is to R, what I need to do, I need to separate them so that we can find the ratio. So if I just cross multiply, I get 2H is equal to R plus H. Now if I transpose H to this side, 2H minus H will give you H is equal to R. Therefore, I can say that H by R is equal to 1/1. This is the final answer. Now question number 13. In this question it is given that A, B, C, D are lying on the circle. AB is equal to CD as it is marked over here, and we are required to prove AC equal to BD. AC equal to BD. Now, whenever you come across a situation, the first thing that comes in your mind is go for congruency of triangle. But this sum can be done in a much easier manner without the help of congruency. We will use a property. Property is equal chords have corresponding equal arcs. Like if you can see, chord AB and chord CD are equal. So the arc AB and arc CD will be equal. Okay, so we write this in the proof like AB is equal to CD. Therefore, arc AB is equal to arc CD. Arc CD. Now, we need to prove that AC is equal to BD. Now, AC you can see is actually a chord, and the arc corresponding to it is ADC, and BD is again a chord which has the corresponding arc as DAB or BAD. Now, the opposite of the property which I said just now is also true. Here you will use the property that equal chords have corresponding equal arcs. Now, the opposite is also true. Now, if I can prove that arc AC is equal to arc DB, my job will be done. Now, arc AC matlab CD plus AD, and arc BD matlab AB plus AD. Now, I have arc AB equal to arc CD. Now, what I am doing, I am adding arc AD to both sides. Now, when I add arc AD to this arc, you can see arc AB plus arc AD gives you arc BAD. So therefore, I get arc BAD is equal to, if I add arc AD to CD, AD to CD, I get arc ADC. So this is equal to arc ADC. Now, since the arcs are equal, the corresponding chords will be equal. So, for arc BAD, the corresponding chord is BD, and for arc ADC, the corresponding arc is AC. So, therefore, I can say that BD is equal to AC. Here we write this reason that equal arcs have corresponding equal chords. Hence, it is true. Okay. So now, question number 15. In the given figure, as you can see, ABCD is a parallelogram. So let's write down the important things.
this is equal to this is equal to this, we have mentioned. Also parallel. A circle through A, B and C intersect C. A, B, C से सर्कल एक पास कर रहा है और वो सर्कल को E पॉइंट पे मीट कर रहा है. Now prove that AD equal to AE. Now AD equal to AE. AD equal to AE. These two sides we need to prove them equal. Now as you can see, side equal proof करना है तो ये एंगल और ये एंगल अपन इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो जॉब हमारा हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में ये आइसोस्सेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाता है. और यू नो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कि अगर बेस एंगल्स इक्वल हो तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. तो हमारा फोकस होगा टू प्रूव दीस टू एंगल्स इक्वल. फॉर दैट व्हाट आई डू, आई टेक दिस एंगल से एंगल 1 एज x. अब आपको पता है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये अगर हम एंगल 2 ले लें तो ये भी x हो जाएगी. अब अगर हम लीनियर पेयर से इस एंगल को निकालें, इस एंगल को से 3, तो ये एंगल आता है 180 माइनस x बाय लीनियर पेयर एक्सियो. अब अगर हम इस एंगल को भी 180 माइनस x प्रूव कर लें तो हमारा काम हो जाता है. तो अगर हमने इस एंगल को नंबर 4 लिखा तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि A, B, C और E ये चारों सर्कल पे है, मतलब A, B, C, E इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा और वहां से एंगल 1 x है तो एंगल 4 आ जाएगा 180 माइनस x. ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है. सो विल प्रेजेंट इट इन दिस मैनर. यहां पर हम पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, ये लिखेंगे. Therefore angle 1 equal to angle 2 equal to x, ये अपन ने ले लिया. Then angle 3 will be equal to 180 minus x. This is by linear pair axiom. And now ABCE is a cyclic quadrilateral, which is again given to us. So I can say that angle 1 plus angle 4 is 180. So I can say x plus angle 4 is 180 because opposite angles are supplementary. Obviously cyclic quadrilateral है तभी ये हो रहा है, तो अभी यहाँ पर देखने को मिलता है. Therefore angle 4 is 180 minus x. So therefore you get what? Angle 3 is equal to angle 4, and therefore I can say that AD equal to AE. So AD equal to AE. यहाँ आप आइसोस्सेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का रीजन यूज कर सकते हो. दिस इज द प्रूफ. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. It says that a cubical tank whose side is 2 meter is filled with water. ये है cubical tank, as you can see, side 2 meter, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है. Now the water from cubical tank is shifted to cuboidal. यहां से वाटर को शिफ्ट किया जा रहा है, वाटर को शिफ्ट किया जा रहा है. तो आपको पूछा गया है whose length, breadth and height are given, as you can see over here. Find the depth of tank which will remain empty. अपने को पूछा है कि यहां से पानी यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट होने के बाद कोई हाइट अगर बच जाता है जो पानी से नहीं भरा, तो उस हाइट को अपने को निकालना है. तो अपन ने क्या किया, इस हाइट को ले लिया x मीटर. तो जो पानी फिलअप हुआ वो पानी हो जाएगा दिस 2 minus x meter. Okay, so we can say that the volume of water from here is equal to volume of water over here. तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम इक्वल होगा, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम होगा. तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के. जो सबसे सिंपल तरीका दिया हुआ है जो अपने सामने है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द cubical tank is equal to volume of water for height 2 था, ये x empty है तो 2 minus x मीटर. तो अभी हम अगर इसको देखें तो इसका होता है 2 क्यूब, क्योंकि वो क्यूब है,
और इसका होगा LBH, L है 2.5 into 2 into this is height is 2 minus 6. यहाँ से हमको हाइट मिल जाएगा। अब ये 2 क्यूब को हम 2 into 2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जा रहा है, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2.5 into 2 is 5 minus 2.5x। अब अगर हम x निकालना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, so therefore I get 2.5x is equal to 5 minus 4, इसको ट्रांसपोज किया that is 1, तो x हो जाएगा 1 by 2.5। इसको अपन अगर पॉइंट को आगे बढ़ाएं तो ये कैंसिल होता है, 5 into 5, 5 into 2, 2 by 5 करोगे तो आपको 0.4 मीटर मिलेगा। So we can say the height of the cuboidal tank that is empty is 0.4 meter. This is the final answer. Now here you can see the cost of papering the wall of the room 12 meter long. So length is given as 12 meter and at the rate of rupees 1.35 per meter square. So rate is given to us 1.35 per meter square. And the total cost is also given. Total cost is rupees 340.20. Then we have been told, and the cost of matting the floor में matting कर रहे हैं at the rate of 85 पैसे per meter square. So second part है rate of matting. What the floor is 85 paise per meter square. This can be converted into rupees 85 by 100 rupees per meter square, and also the total cost is given. So total cost of matting the floor is given as rupees 91.80. Now students, we have been told to find the height of the room. Now here you can see that here we are doing this on the walls. So I can say that the total cost is equal to cost of covering the four walls. So the area of 4 walls we are required to find. Area of 4 walls formula is 2h into L plus B. Now L is known to us, so we can write 2h into 12 plus B, and this will be equal to, I can say, total cost upon rate. As you know, area can be founded by this formula. So I can say therefore 2h into 12 plus B is equal to 340.20 upon 1.35. Okay, now this, if we keep on cancelling, we will get some value. So here we can see there are two variables, h and b. So if I know the value of b, I will be able to find the value of h, जो हमारा question है. चलो second part में चलते हैं. Rate of matting the floor. Matting the floor का एरिया होता है L into B. तो अगर हम इसको बोलें L into B is equal to total cost इतना है 91.80 divided by rate 85 by 100. इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है. अब अगर हमको यहाँ L की वैल्यू पता है, जो कि दिया हुआ है, L की वैल्यू 12 है, into B is equal to this. अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको B का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा. उस B के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको H का वैल्यू मिल जाएगा. Let me tell you the value of B in this case is 9 and the value of H is 6. So B is equal to 9 meter. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो H is equal to 6 meter. तो ये हमको आंसर मिल जाता है. Question number 20. Here it is given that a tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meter. As you can see, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर. और फिर आपको बुलाया then it becomes right circular cone with a maximum height of 13.5 meters above the ground. फिर ये कोन बन जा रहा है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट 13.5 मीटर है. तो हमने इसके हाइट को कैपिटल लेटर नोट किया, that is 3 मीटर गिवन,
और इसके हाइट को स्मॉलेस्ट से डिनोट किया, जो कि 13.5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 10.5। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, और रेडियस दिया है 14 मीटर। तो रेट ऑफ पेंटिंग दिया है ₹2 पर मीटर स्क्वायर और रेडियस भी दिया है। अब आप देखो, जब इस टेंट को अंदर से पेंट करेंगे तो इसमें जो पेंटेड एरिया आएगा वो आएगा इसका CSA और इसका भी CSA। लेकिन आपको पता है इसका CSA निकालने के लिए आपको L की जरूरत पड़ेगी। ये R दिया हुआ है 14 एंड यू नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम L को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पहले फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर दैट इज 10.5 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर। आप अगर L की वैल्यू निकालते हो बाय कैलकुलेशन तो वो आता है 17.5 मीटर। नाउ अगर हम दोनों का CSA निकालें तो एरिया टू बी पेंटेड अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा CSA ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला है πRL और सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRH। अब R दोनों का सेम है, H यहाँ पर हमें स्मॉल नहीं लिखना है क्योंकि हमने सिलेंडर की हाइट को कैपिटल से लिया हुआ है। तो अगर ये वैल्यूज हम देखें, यहाँ से पाई कॉमन निकल सकता है, R, L और H की वैल्यू अपने को लग रही है, R पता है, L पता है और H भी पता है, दैट इज 3। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को एरिया मिल जाएगा। अब अगर हम रेट ऑफ पेंटिंग देखें 2, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is equal to area multiplied by 2. So 2 into pi RL plus 2 pi RH. There is the calculation that you have to do. और इसका जो आंसर आता है that comes as ₹2068. So the answer is ₹2068, जिसको आपको कैलकुलेट करके निकालना है। Question. Here it is given that from a solid cylinder, question number 28. With height, a cylinder with height 15 meter and radius 7 centimeter. ये सिलेंडर है, इसकी हाइट दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है। इसमें से a right circle of cone of the same height and same base is removed. तो ये वाला कोन को जिसकी हाइट सिलेंडर के जैसी है और जिसका रेडियस भी सिलेंडर के जितना है, इसको काट करके निकाल दिया गया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन के वॉल्यूम को माइनस किया गया। तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आपको पता है दोनों की हाइट सेम है, रेडियस सेम है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। तो पाई R स्क्वायर H माइनस ये हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। और जब आप सभी कुछ कॉमन लेकर के सिंपल वे में कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H कॉमन, यहाँ आएगा 1 माइनस 1/3, इसको माइनस करोगे तो आएगा 2/3 पाई R स्क्वायर H, और ये सारे वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 1540 centimeters cube. So this is the ultimate answer for this particular question.